A big Al-Qaeda module busted by UP ATS in Lucknow. A day after the arrest of 2 Al-Qaeda terrorists, a massive manhunt is currently underway across Uttar Pradesh as 5 terrorists are still on the run. High alert has also been sounded in the state as suspects are learned to be carrying explosives. India Today has also accessed exclusive details about the terrorist module. In fact, the terrorists reportedly made cooker bombs using an e-rickshaw battery in just 3,000 rupees. They were in the process of identifying their target. UP ATS is now conducting raids in 4 UP districts. 3 suspects have now been taken into custody from Kanpur and 1 from Sambhal. A special Delhi police team now will also be visiting Lucknow soon to interrogate the suspects. India Today has learned that a safari car which was found parked outside the terrorist's house could prove to be key link in this case here. The car reportedly belonged to arrested terrorist Minhaj's neighbor Shahid, was spotted in several states including Jammu and Kashmir. Now India Today's Samaj Srivastava spoke to UP Law Minister Brajesh Patak, who said that call details of various suspects are currently being traced and in fact, those accused will not be spared if found guilty. इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का मन हम लोग बनाए थे और काफ़ी समय से हम लोग पीछे लगे हुए थे। जैसे ही वो घर पर मिले उनको धर दबोचा गया है। अभी पूरी जांच चल रही है। अभी कई बड़े चेहरे भी सामने आएंगे और ये तय है कि इसमें हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को, जो शांति व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयास ये लोग कर रहे हैं, खून खराबा करना चाहते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग सर एक्सेस में हैं? 2 अरेस्टिंग हुई हैं, जैसा कि कल एडीजी ने भी बताया। अभी चूंकि जांच चल रही है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। जांच के दौरान कुछ भी उजागर करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये तय है कि हम बहुत कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को, माहौल को बिगाड़ने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे और हमारी पुलिस ATS हर बिंदु पर जांच कर रही है और कई लोगों के फोन नंबर्स और कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। ये जो मॉड्यूल था, ये कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था और हालांकि ATS चाह रही थी कि और डिटेलिंग कर ले, लेकिन चूंकि कोई बड़ी घटना न हो इसलिए इनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे भी जो है इनसे जो संपर्क में हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस बिंदु पर गिरफ्तार किया है, जो अलकायदा से लिंक्स पर जो गिरफ्तार किया, वो स्पष्ट है, एविडेंस कंफर्म्ड है। ये जो अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है उसके साथ जुड़े हुए थे और इनका संचालन वहाँ क्वेटा पेशावर क्षेत्र जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है उसमें पाकिस्तान साइड से किया जा रहा था और इसमें जो रिकवरीज हुई हैं वो दर्शाती हैं कि अगर ये घटना होती तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता। Now, the arrested terrorists were making DIY bombs. Chaiti Narula explains exactly how. We're talking about the Lucknow terror crackdown and the DIY bomb, the investigation of the arrested terrorists. India Today has learned that these terrorists were making a DIY bomb. Let's get you the details. The accused used own money for the IED bomb making. They used their own money to do this. The pressure cooker IED took 3,000 rupees to make this a DIY bomb. We're talking about e-rickshaw batteries were used in this particular bomb. What more do we know about this? Terrorists were identifying their targets, use Telegram app to get in touch with Al-Qaeda as well. So they were using the Telegram app. AF Pakistan border base. Omar was the handler. And this is what we know so far on the 3,000 rupees DIY bomb. Now, meanwhile, Al-Qaeda suspected terrorist Masiruddin's family rejects the police's version here. They said that the police took a normal pressure cooker, presented it as a bomb. Let's take a listen as to what the family is saying. करीब 11:30 का टाइम था जब ये लोग आए हैं। हमारे हस्बैंड चाय पी के बैठे हुए थे, तो जब दरवाजे हमने खोला तो हमको 3-4 आदमी मिले। तो हम अंदर आए तो इनके हमने कहा पता नहीं कौन है, तो ये मेरे आदमी खुद ही मतलब हस्बैंड खड़े हो गए। उन्होंने खुद ही उन लोगों को आवाज दी कि हाँ सर क्या है, तो कहने लगे कि जो है मुशीरुद्दीन कौन है, तो उन्होंने बताया। सर ऐसे होते तो वो भाग लेते, तो वो खुद ही निकल के बाहर गए, कहने लगे हम हैं। तो उनको पकड़ा, किसी की सुनी नहीं कि जो है कहाँ लिए जा रही है। बेटी मेरी रोती रही, चिमटती रही कि जो है धमकी भी दी, हट जाओ पीछे, बंदूक दिखाई।
तरीके से सर हम लोगों को फंसाया गया है। क्या चाह रही हैं आप? सर उनको छोड़ दीजिए, उनको बस छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। करते नहीं थे तो आतंकी कैसे हो गए ये बताइए। पहले जब कहीं जाते नहीं थे बाप मर गए, 6 साल हो रहे मरे। भैया हम चाहते बस भैया वहाँ छूट जाए खाली, और कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। So now India today has reached to a residence of Al-Qaeda suspect Mushruddin, and right here we are showing you the visuals, the place where Mushruddin used to reside along with his family. His family included his mother, his wife, his 3 daughters and a 4-year-old son. This is a semi-constructed house, as you can see in the locality, in the narrow lanes of Mariama of Lucknow. So these are the scenes you are witnessing. Mushruddin used to run an e-rickshaw, but due to lockdown in the first wave of COVID-19, his e-rickshaw business went down, after which he started some battery work, but then he went into some suspicious things as per the police, as per the ADG and IG ATS, and thereafter the team of ATS raided this particular locality, this particular house, as you are seeing in the visuals. Cameraman Harish Kandipal showing you the visuals of semi-constructed house. This is the place where UP ATS team raided and recovered some explosives. As per them, also some other elements were recovered from this spot, which were taken, though the family plead innocent and says that Mushruddin was never involved in all these things and he is being put into radar for nothing. With cameraman Harish Kandipal, Samarth Srivastav for India Today. Now, politics erupts over UP ATS busting Al-Qaeda terror module in Lucknow yesterday. BJP has hit out at Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, who questioned UP police after it arrested 2 Al-Qaeda terrorists from Lucknow. Akhilesh had yesterday said that he neither believes in the UP police nor the government when it comes to arrest of terror suspects. BJP IT cell head Amit Malviya has slammed Akhilesh for his comments. He said, and I quote, "First, Akhilesh Yadav doubts vaccine drive, and now he says that he can't trust the Uttar Pradesh police's action against terrorists. Then why does he want to become the chief minister?" Now, meanwhile, Congress also has raised questions on UP police's action. In a jibe, Rashid Alvi said that terrorists will keep getting arrested until UP polls. In fact, Uttar Pradesh ATS had just yesterday arrested 2 suspected members of an Al-Qaeda terror ring, said that they were trying to conduct suicide attacks in the run-up to Independence Day. तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था, टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब जब चुनाव आता है, इस तरीके के वाक़यात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इसलिए आपको भी सुरक्षित किया है, हमें भी सुरक्षित किया है, प्रदेश की 23 करोड़ जनता को भी आतंकियों से सुरक्षित करने का काम हमारी एजेंसियों ने किया है। इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। बहुत चिंता होती है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। अपनी सरकार में आतंकवादियों को छोड़ने वाले अखिलेश यादव जी कल को कहीं ये न कह दे कि इन मासूम को फंसाया जा रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ये आतंकवादी हैं। आतंकियों को मजहब से जोड़ करके तुष्टीकरण की इस नीति पर अब आप कम से कम बंद कर दीजिए और पुनर्विचार कीजिए। आज पार्टी की क्या दशा हुई है, ये इसी कारण से है। Now, UP ATS has swatted a big plot to bleed India. 2 Al-Qaeda-based terrorists have been arrested from Lucknow. Police say that both had planned suicide strikes across the state before August 15th. Pressure cooker bombs, firearms have been recovered during these raids. Samarth Srivastava brings us more on that. A massive Al-Qaeda plot. Conspiracy for suicide strikes.
Pakistani handlers pulling the strings. Bid to spill blood ahead of Independence Day. This could have been a massive attack on Indian soil. Serial blasts in Lucknow and other cities, now foiled by the Uttar Pradesh anti-terrorist squad. With arrest of 2 suspected Al-Qaeda terrorists with links to Kashmiri terror outfits and with Pakistani handlers, the sinister plan was no ordinary one. Cops say the terrorists were to execute a huge attack in the run-up to August 15 to target Independence Day celebrations. Along with the plan for serial blasts, the terrorists were also planning suicide attacks. 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। Active pressure cooker bombs, arms and ammunition were recovered along with large quantities of explosives. Bomb disposal squad were called in to defuse the live bombs. Acting on a tip-off, the anti-terrorist squad laid siege and raided the home of 3 suspects. As you are seeing the visuals, the raid was on since in this particular locality. As you can see, black commandos are also put into action. That shows the seriousness of this particular matter. The 3 houses back to back are being raided by the Uttar Pradesh ATS and UP police since as told by the neighbor Alam. He also told that all 3 persons whose houses are being raided were staying here since last 10 to 20 years. Though Cops said these terrorists had most likely burnt several documents that could have been blueprints of the major attacks. A team of Delhi Police Special Cell will go to Lucknow to interrogate the terrorists. अभियुक्त मिनहाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। अभियुक्त मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। The raids began as early as 11:30 a.m. on Sunday and went on for hours. The accused were allegedly part of an Al-Qaeda sleeper cell. ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर हम यहाँ तो 12 साल के करीब थे, अपना बिजनेस करते थे। हाँ। तब से हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे कोई बाहर के लोग आ रहे थे, कुछ ऐसी गतिविधियाँ, कुछ बाहर से लोग आते थे रात बिरात मिलने के लिए क्या कुछ? सर हमारे जानकारी में नहीं है, ना मैंने ये देखा है। UP ATS IG GK Goswami told India Today that some of the suspects fled and a manhunt is on to nab them. According to police officials, Peshawar-based terror handler Omar Al-Mandi was overseeing the operation through the Telegram Messenger app. अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर अल-मंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। The terror plot bust has led to security to be beefed up across the state. Officials have issued alerts at railway stations, airports and bus stands. With Samarth Srivastav in Lucknow, Bureau Report, India Today. Now, Suhail Dev, Bharatiya Samaj Party chief Om Prakash Rajbhar on Monday said that he will be meeting with Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal this week. In fact, the meeting will be held to form a strong alliance ahead of the upcoming Uttar Pradesh polls. The meeting will be held on 17th of July in the presence of Rajya Sabha MP Sanjay Singh. Talks will be held to include AAP in the Bhagidari Sankalp Morcha as an ally here.
The Morcha is a front of smaller parties led by Rajbar. AIMIM has also recently announced that it would contest 100 seats in the next Uttar Pradesh Assembly polls in alliance with Morcha. Now, Rajbar said that Morcha has held initial level talks already with the SP for alliance. Some big news coming in. BJP MP Sudhir Gupta stokes controversy with his comments on Amir Khan's recent separation with Kiran Rao. Gupta stated that Amir is not concerned about his children with previous 2 wives and is now out looking for a third one. BJP leader also accused Amir of being responsible for population imbalance in the country. He made remarks while calling for strict steps in control, in fact, steps there to control population growth. Here we're looking at quite some controversial statement that's been made by BJP MP Sudhir Gupta. He stokes a controversy there, commenting on Amir Khan's recent separation with Kiran Rao. Gupta states that Amir Khan is not concerned about his children with the previous 2 wives, is now looking for a third one. BJP leader also accused Amir Khan of being responsible for population imbalance in the country. He made the remarks while calling for strict steps to control population growth. हीरो आमिर खान हैं। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ। यह जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज़्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज़्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। Now, fresh controversy there has erupted in Uttar Pradesh after Chief Minister Yogi Adityanath unveiled a new population control draft bill which proposes that people with more than 2 children will be debarred from contesting local body polls, applying for government jobs and receiving any kind of subsidy. The Congress and Samajwadi Party has slammed the state government's orders here, calling it political agenda and saying it's not a democratic move. Let's take a listen at this report. Uttar Pradesh, country's most populous state. Nearly 20 crore people live here, accounting for country's 16.5% population. UP Chief Minister Yogi Adityanath has unveiled population policy for the year 2021-2030, aiming to curb the rise in population. Hum do, hamare do is the motto for UP's population policy. The UP population policy focuses on having 2 children and provides incentives for people who help in controlling the population. It also states that those having more than 2 children will not be allowed to apply for government jobs, and those who are already inducted won't get promotions. In addition to that, it bars people from contesting local elections and provides a proper system for safe abortion. Speaking at the event, Yogi Adityanath emphasized that interests of all communities have been taken care of in the new policy. ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं। Crucially, the population policy incentivizes those who have 2 or less kids. Priority in government job, rebate in home loan, and benefits in admission, treatment, and insurance are some of the key incentives. Yogi also said that rising population and poverty are interlinked and are affecting growth. With only months left for the state polls, opposition is calling it a poll gimmick. उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है?
Crucially, NCP chief Sharad Pawar called population control need of the hour. But religious leaders have mixed reactions. जो भी कानून आए सबके लिए एक समान आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक समाज के लिए तो कानून लागू हो जाए और कुछ ऐसे लोग हों जो इस कानून का पालन ना करें। जो भी बिल सरकार लाएगी हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे, हम सब लोग सरकार के साथ हैं। It's not just one blanket solution that you just bring in a policy and it's going to stop at that level. Because the more you educate people, the more they become aware, automatically it becomes a voluntary decision. Population explosion is a big problem in India. With over 1.3 billion people, resources are limited. It also estimated to surpass China and become world's most populous state by 2027. With inputs from Samarth Srivastav in Lucknow, Bureau Report, India Today.